Hello everyone, I welcome you to Kalam IAS and myself Akshay Guru. So guys, I am here with bringing about for you a very new initiative, I would say rather innovative initiative, wherein what we have decided or what we have planned for, that to have a video like say, or like a kind of a, video graphic explanation of geography as a subject by means of most important like maps, because see guys, whenever geography that the word that you heard, right, you will find सबसे पहले जो mind में आता है that is must be something in connection with the map. Then equally you will find diagrams, various, because the subject of geography is rather a visualization based subject. Okay? That is rather a visualization based subject wherein you have to visualize के phenomena कैसे हो रहे, you have to connect कि ये phenomena या मतलब ये happening है, interconnections कैसे वहां पे established हो रहा है. Okay, so diagrams are the forms a very important aspect. And then equally you will find various like graphs over there, जैसे atmosphere है, atmosphere depth versus temperature, okay, that one, or you will find और related जो case है ना human geography में भी बहुत सारे graphs होंगे. So graphs, table or charts. So this particular subject of geography that is highly, I believe very much that demands the visualization, that demands interlinking, that demands connectivity as in. And this particular case is what is to be explained in this particular explanation. Okay, हम क्या करेंगे that what we have decided, देखो for the purpose of geography, the most important source, I would say rather the Bible, is NCERTs, है ना? NCERTs particularly, and this NCERTs like the whole, like you will find plus one NCERT, that is 11th, and plus 2 NCERT 12th. You will find ये दो NCERTs है, those are rather covers the whole geographic coverage as in, ठीक है, जो UPSC geography explanation के लिए help करेगा. And in this initiative what we have NCERT based maps, NCERT based diagrams, NCERT based graphs, NCERT based charts, right, जो भी इसमें include हो गए, particularly maps तो हमारा बहुत sole focused area है. You will find over in this explanation almost 50 plus maps are there, ठीक है. अब ये सारे जो हमने maps, diagrams ये add किए हैं, this is from NCERTs, ठीक है, NCERTs. अब ये NCERTs कौन से, 11th and NCERT 12th. So you will find with the help of this maps, diagram, graphs, chart and other figures as well, what we are going to have a clear understanding over on the various concepts of geography. And believe me guys, I'll try my best to make this journey, okay, I'll try my best to help you out to make this geography very interesting, very much interesting in fact, with the help of this maps, diagrams, figures and this thing, ठीक है. सोल या जो कोर होगा हमारा वो तो मैप बेसिस होगा, बट कोई एरियाज जो होते हैं ना वो जो मैप के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होते, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे कोई मैप नहीं बनेगा, है ना. इन सच अ केस यू विल फाइंड वहां पे फिगर या डायग्राम हमने ऐड किया, ठीक है. सो दैट रादर गिव्स यू ऑल ओवर हियर यू विल फाइंड अप्रोप्रिएट चैप्टर के नंबर्स भी होंगे, यूनिट नंबर्स भी होंगे, और किस किस चैप्टर से कौन सी डायग्राम्स है, इनफैक्ट सिक्वेंशियली रखा है मैंने, सो दैट यू विल फाइंड इट रादर वेरी interlinked and connected as well, and you can have a better understanding with this NCERT geography as a whole subject. Okay, so this is what the brief explanation about this initiative that we are going to have for you.
Okay, so without wasting further time, now I shall start this geographic NCERT मैप एंड दिस डायग्राम ग्राफ वाला एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो कुछ ज्योग्राफी हम नए वे से पढ़ने की कोशिश करते हैं आज. एंड बिलीव मी गाइज, यू विल फाइंड दिस interconnection, this explanation rather very interesting. Okay, so yes, watch it till the end and you will have a better understanding with the, और आपके सारे जो concepts के doubts होंगे, सारे जो concept issues होंगे, I believe कि ये यहाँ इस वीडियो से solve हो जाएगी. Okay, चलो. So अब इसमें मैंने क्या किया, as I told you, 11th and 12th. ठीक है, so 11th has two titles, 12th again has two titles. 11th is for the physical geography. ठीक है, 11th ये जो स्टैंडर्ड है that is dedicated to the physical geography. इसमें फर्स्ट टाइटल होगा fundamentals of physical geography, that deals with the fundamental physical geography and world geography. And then second, Indian physical environment, that deals with the Indian physical geography. Then 12th you will find, 12th it simply deals with the fundamentals of human geography. ठीक है, fundamentals of human geography. And then you will find the Indian people and economy. Indian people and economy. Okay, so there are four such titles are there जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड यू विल फाइंड कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा सेशन. ओके, देन देखो, so first title, class 11th. Okay, class 11, fundamentals of physical geography. This is what this blue book that explains about. Okay, the world geography and the basics of geography, geomorphology, climatology, oceanography and the biodiversity biogeography as well. ठीक है, so that it connects with the conservation, that aspect. So चलो अब start करते हैं with this book. It starts with the first chapter, very first chapter, that is itself trying to explain you the fact that how geography as a discipline is. Over here, आप ना कुछ दो important figures देखोगे. ठीक है, काइंड ऑफ वेन डायग्राम आई वुड से. एक चार्ट होगा, एक फ्लो चार्ट जैसे, या व्हाट द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी वाला होगा, और एक होगा दिस फ्लो चार्ट विच रिफ्लेक्ट्स द field of geography. ठीक है, that reflects the field of geography. Now the very geography as a subject, that again क्योंकि यहाँ पे भी वो दिया नहीं, तो what geography is simply the science that studies about the various phenomena those are happening on the earth's surface. So earth's surface is rather the core for the geographical studies. And simply when it comes to surface, you will find इसमें बहुत different domains आएंगे, बहुत different subject की overlapping होगी. So in that sense, you will find geography has a interrelation या connect with the various other branches of studies as well. है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि geography पढ़ रहे हो, it means only geography पढ़ रहे हो. No, you should have okay the knowledge, okay, of various different branches as well. Just like say for example, you will find in order to understand oceanography, you should have knowledge about hydrology as well. Yes, in order to have the better understanding of climatology, you should have understanding of meteorology also. In order to have right understanding of geomorphology, there it needs the knowledge of geology. So just like फिर उसी सेंस में पेडोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, फाइटोजियोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी से जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी से ह्यूमन इकोलॉजी, ओके, देन एंथ्रोपोलॉजी से कल्चरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट्स फिलोसॉफी से आएगा, देन सोशियोलॉजी से सोशल ज्योग्राफी, एंड यू कैन स्ट्रेच दिस continuum of geography to all other existing branches of our studies. Okay, economics say economic geography and this. Thus, geography is like an all-round science because it interacts. Okay, it interacts with various branches of our studies. ठीक है, ये है that first figure that that this
क्लास 11 बुक रादर स्टार्ट्स विद, ओके, एंड आई होप आपको इसकी मीनिंग, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मीनिंग है ज्योग्राफी का एज अ डिसिप्लिन इज प्रीटी मच क्लियर विथ. Next, you will find in the same chapter there is another chart that helps us to understand what are the various branches of the studies, or how, like we have discussed, this various subject domains. In the same way, अब क्या है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है इसके सब ब्रांचेस कैसे डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, एंड द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी दिस चार्ट इज रादर एक्सप्लेनिंग एज फॉर. सो you'll find based on systematic approach, okay, there are 4 different branches of geographical study. एक होगा principles of geography, ठीक है, जो philosophy से overlap करेगा. एक होगा physical geography that deals with the earth surface in a physical format. Then third is methods and technology, kind of cartographic methods, ठीक है, just to draw a map and drawing that particular case. And another branch that keeps the human and related phenomena at the center, that is human geography. Okay, so you will find these are the 4 branches है जो ये चार्ट हमें एक्सप्लेन कर रहा है. अब देखो इस फर्दर ब्रांचेस के फिलोसॉफी में, प्रिंसिपल्स में ज्योग्राफिकल थॉट्स, एंड ह्यूमन इकोलॉजी वेयर लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन इज व्हाट स्टडीड, ठीक है. तो ये प्रिंसिपल या फिजिकल फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी. मेथड्स एंड टेक्निक्स में एक बनेगा कार्टोग्राफी, एक बनेगा फील्ड सर्वे एंड मेथड्स, एंड एक और बनेगा दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक दैट कनेक्ट्स विद द कैपिटलिस्ट अप्रोच, ठीक है, दैट कनेक्ट्स विद द कैपिटलिस्ट अप्रोच. देन one more further expand, that is rather current technological inventions है, current technology, that is geoinformatics, and that it leads to GIS, geographic information system, GPS, geographical positional system, ठीक है, and LIS, ठीक है. So these are what the 2 subdivisions of these branches. Then अब जो वैसे भी इस बुक्स में एक्सप्लेन किया है क्लास 11th and class 12th, okay, you will find this 2, physical and human. So this physical has further few branchings. देखो geomorphology, climatology, hydrology, soil geography. Okay, and you guys should have a rightful idea and information about all these branches, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का स्टडी का पार्ट बनेगा, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अभी हम इसमें डिस्कस भी करेंगे. Then human geography rather gets subdivided into number of cases, जैसे social और cultural geography. Then historical geography, ठीक है, geography should be studied historically and history should be studied geographically. Immanuel Kant. Okay, so history, then population and settlements, then political aspects and economic aspect, ठीक है. So these are, you will find the subdivisions or branches of human geography. Then economic geography के 4 subdivisions बनेंगे, 6 subdivisions in fact यहाँ पे जो दिए है. You will find agriculture, industries, tourism, trade, transport, infrastructure and services. Okay, so economic geography that is now widely gaining importance in the contemporary time is further being divided into 6 different types. ठीक है, so this chart simply gives us the whole idea, okay, about the extent or subdivisions of geographical branches. I hope you guys are getting this explanation with the chapter geography as a discipline. See, अब ये chapter हम skip कर सकते थे, but the thing is कि ये अगर हम समझेंगे नहीं, that is not going to have a better idea कि जो हम इसके आगे जो सारी चीजें cover करेंगे, ठीक है. So you should have pretty much clarity. Then next chapter, the chapter 2nd, unit 2nd, it's named as the origin and evolution of the earth. Okay, अब देखो origin and evolution of the earth, it simply connects with the origin and evolution of the universe. What is universe? Universe is simply everything around us, ठीक है, or simply everything that is the universe. अब in order to understand the origin and evolution of the earth, you have to understand the origin and evolution of the universe. And in order to explain the origin of the universe, there is the
बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये एक फिगर वहां पे फिर से दी है ओवर इन द सेकंड चैप्टर, एंड ये एक्सप्लेन कर रही है हमको हाउ यूनिवर्स हैज started to evolve and ultimately the earth then we want to understand. This is what the point of singularity, which was highly, crux mass है, infinite density, infinite temperature, least possible volume to be known as singularity. It started to explode and this explosion has led to the evolution of mass, okay, or the dispersion of mass in all possible direction. So with time, ये टाइम है, ठीक है, with time you will find ये जो mass of size of universe है, it is now increasing. पहले इसका diameter मान लो या stretch जो था ये इतना ही था, it was very small, it was in fact very small, then its size has increased. Now we are like after 93, okay, the overall diameter is almost 93 billions of light years, and after almost 5 billions of years after, right, this formation of the earth, we are basically living over here. ठीक है, so you will find overall वैसे ये जो explosion हुआ था, it was 13 to 14 billions of years ago. Okay, so that is the fact, and after this earth has started to evolve. अच्छा, in this connection then I guess Big Bang theory आप फिर से पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा, मैंने फिर भी try किया just to explain this fact. Now in this connection there are various mentions over in the chapter, just like you will find then gases, nebular gases hypothesis given by the Immanuel Kant and Laplace, then you will find the tidal hypothesis given by Jeans and Jeffrey, then you will find the Chamberlain's gases hypothesis, ठीक है, that Chamberlain's model itself, that is equally being given, and then you will find supernova hypothesis or supernova explanation of the origin of this earth given by Hawes. ठीक है, so there you will find over in this chapter itself ये सारे mentions किए है ना, तो what you are supposed to just go through that paragraph जहां पे ये सारी कुछ चीजें explain की है, ठीक है, and that is what about this origin of universe. ठीक है, ये origin of universe आपको origin of earth से connect करवा देगा. Then next is the interior of the earth, chapter 3. ठीक है, chapter 3 interior of the earth, there you will find it explains about the how earth's interior rather look like. Okay, how earth's interior rather look like. So you will find, अब देखो, earth's interior rather look like in this particular fashion. इसमें disputes ये again what divisions हो सकते हैं of opinion, but what as of now we have divided earth is, or interior of the earth is 3-layered structure. ठीक है, it is rather a 3-layered structure, and these 3 layers are core, mantle and crust. ठीक है, so these are the 3-layered structure of the earth. Now each of this layer is further being divided into 2: solid innermost core, liquid outer core, then lower mantle, then upper mantle, then lower crust and upper crust. Okay, upper crust. So this makes the whole division of interior of the earth, though we don't have much better idea about the layer in depth, but फिर भी जितनी idea है हमारे पास based on tracing various sources, we do have this kind of understanding. अच्छा, over in this, crust is up to 0 to 100 meter thick, mantle has depth up to 2900 and kilometers I am talking about, and the core is stretched then after this to 6378 kilometers. ठीक है, though it varies, but yes, ultimately ये stretch इतना होगा. Now अब over here एक और देखो, और भी terms है जैसे lithosphere and asthenosphere. Just as I told you that there is still a debate like in how many layers and exactly what layers we shall divide the earth's interior. So many argues that earth may be made up of 2 layers only,
किसी का आर्गुमेंट है नो अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर एज इन, और किसी का आर्गुमेंट है इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, बट नॉट द 3 लेयर दैट यू हैव मेंशन ओवर क्रस्ट, mantle and core. Rather, Earth's interior has outer lithosphere, then asthenosphere, and then core, या जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोस्फीयर. So the same you will find, देखो lithosphere is made up of crust and upper mantle, right? Then asthenosphere you will find the rest of the part of the upper mantle and the kind of this upper lower mantle itself, and then the centrosphere. This is what this explanation connected with this divided or explained as in. Then next is, what are the sources that we have taken in order to read the information about the interior. ठीक है, what are those sources? अभी sources में हम देखेंगे the most important source is seismic waves, जिसको हम earthquake waves भी बोलेंगे, है ना. seismic waves मान लो, या जिसको हम earthquake waves भी बोलेंगे, ये सारा rather the best source as in, and there you will find कि the diagram that explains about the shadow zone. ठीक है, shadow zone क्या होता है. अब shadow देखो, shadow का मतलब क्या होता है, that is simply absence of light, है ना. अब earthquake shadow zone, it simply explains the fact that कि अर्थ का ये जो शैडो जोन है, इट इज हैविंग नो प्रेजेंस ऑफ पी वेव्स और एस वेव्स. ठीक है, जैसे पी वेव्स का शैडो जोन है, बिकॉज पी वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन इट एंटर्स इनटू द लिक्विड, एंड एज इनर कोर इज लिक्विड यू विल फाइंड इसमें देखो डिफ्लेक्शन होगा, है ना. इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन, and that deflection lead to this particular case. And in this zone देखो ये वाला कहां से 105 degree, if we consider this is 0, if we consider this is 180 degrees, ठीक है, earth divided into two half 180 degrees as in, तो 105 to 140 degree यहां पर you won't find as such presence of P waves. इसी को हम दोनों भी हाफ में, ठीक है, यहां पर भी, so that is to be known as P waves shadow zone. अब S wave shadow zone क्या होगा, shadow zone again absence of light, absence of seismic waves over here, S waves particularly, ठीक है. Over here you will find S waves can pass through solid, but they can't pass through liquid or even gas, है ना. इनके भी इसी पास नहीं हो सकते. ये पास नहीं होंगे, then you will realize कि after or keeping the tangential position to the outer core, they will find presence, okay, that on the other half. तो 0 to 105 degrees तक ये present होंगे, but after 105 degree even 180 degrees you will find ये absent होंगे यहाँ पे, है ना. this rather absent, and in the both the half. So shadow zone of S waves, you will find shadow zone of S wave is larger than that of the P waves. That is what this simply figure is trying to explain us. Okay, तो यहां से ये reading होगी. Then next, over in the chapter you will find यहां पर ही see volcanic landforms are equally being mentioned. ठीक है, volcanic landforms as in, ठीक है. अब volcanic landforms क्या होता है, देखो volcanic landform मतलब whenever molten magmatic material trying to outpour on the surface, it gets solidified maybe below the surface or after outpouring the surface itself, ठीक है, and it then lead to different shapes and features that is to be known as see volcanic landform. ठीक है, अब यहाँ पे दो type of features rather you will find are getting developed. एक जो फीचर होगा इंटरनल लैंडफॉर्म्स, एक जो फीचर होगा दैट इज एक्सटर्नल
लैंडफॉर्म्स, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैंड। नाउ अब यू विल फाइंड इंटरनल, देखो लैंडफॉर्म्स कौन से आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस, बट यहाँ पे डायग्राम में जो मेंशन है, बैथोलिथ दैट इज काइंड ऑफ द बेसिक रॉक स्ट्रक्चर, द बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर दैट इज हैज सम, इट इज एक्सपोज्ड ड्यू टू सम इरोजन, देन स्टैक, then you will find dike, vertical structure, then you will find laccolith, kind of mushroom shape, then you will find sill, sill is like a horizontal structure, ठीक है, sill is kind of a horizontal structure, and then you will find यहाँ पे diatreme, okay, diatreme is there as well, okay, so those are the internal or intrusive landforms. There equally जो material depth में होगा, these are the plutonic rocks, and those material lying close to the surface, however internally equally, those are the volcanic rocks, ठीक है, I hope getting it. Then over on the surface, these are extrusive landforms, ठीक है, external बोलो या extrusive बोलो, same. अब over on the surface you will find, देखो composite volcano, right, composite volcano as in, and it is how it would rather look like, right? Composite volcano has different layers of eroded, volcanic material that emits in a sequence, and then it gives you this kind of appearance, this composite volcano. देखो यहाँ पे ये सारे लेयरिक अरेंजमेंट देखेंगे. Then you will find lava flow. Lava flow मतलब जहां से लावा, मतलब इस वे से लावा फ्लो करेगा. Then you will find irregular structure like volcanic necks with a radiating dikes. Then ash flow is equally there. Ash का movement होगा, ठीक है. Caldera with cinder cone on floor. You will find caldera or cinder cone, ठीक है. So that is what the cinder cone. And caldera is generally a kind of opening, large scale opening of or mouth of the volcano from where generally this lava erupts, ठीक है. तो ये है यहाँ पे रहेगा, ठीक है. ये शील्ड वोल्केनो भी बनेगा कि यहाँ पे शील्ड वाला स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा. Okay, then you will find lava plateau. Lava plateau, it's simply when due with the basic lava erosion, जब ये lava spread होगा and lead to the plateau like the Deccan plateau, ठीक है. Then if this lava is prone to erosion, ये lava mesa बनेगा. Then उसके बाद बनेगा lava buttes, okay, lava buttes बनेगा. Cinder cone, ash cone with the volcanic dome. So these are the intrusive and extrusive landforms, as in like I hope कि यहां से आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है. एनसीईआरटी से फिर से गो थ्रू करोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगी चीजें. ओके, देन fourth chapter now, and this chapter is like distribution of oceans and continents. Okay, distribution of oceans and continents. Now देखो, this is rather very much important because this chapter is going to help you to understand two basic concepts या theories, जिसमें continental drift theory होगी and plate tectonic theory होगी, ठीक है. So now देखो, अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया है actually, and that I find कि ग्राफ भी हमें ज्योग्राफी को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है. So this particular graph, it help us to understand कि what is the relationship or to what the way these continents and oceans are rather having interconnection. देखो, this on y-axis you will find height or depth that is given. 0 kilometer is the sea level that we consider 0 kilometer, and you will find on x-axis the area that it rather covers. Okay, अब देखो, ओशन, ये तो पार्ट आ गया एटमॉस्फेयर, 0 टू फर्दर, राइट, दैट इज एटमॉस्फेरिक पार्ट है. एटमॉस्फेयर तो खैर इससे भी ऊपर ही जाएगा, बट हाईएस्ट माउंटेन दैट इज माउंट एवरेस्ट 8848.84 meters. That is what the highest elevation over in the atmosphere from surface. Okay, so that it connects with. अब यहां पर you will find for the case of ocean, it has different features. जैसे continental slope, then continental shelf, उससे पहले होगा वैसे continental shelf, okay, continental slope. Then you will find the average depth of the ocean somewhere around 4 kilometers. See, that is what the average depth of ocean. Okay, or average height of elevated landforms you will find hardly 1 kilometers. Okay, up in the atmosphere. Now then ocean basin floor rather start. This is what ocean sea floor जिसको बोलेंगे हम, and
ocean depth or the deepest point over in the ocean, that is Mariana Trench, rather stretch for 11.2 kilometers. Okay, and this graph is simply explaining us about this thing. Okay, so it is rather explaining us this important fact. I hope ये जो graph है that is equally pretty much clear to you guys. Next, over in the same chapter, then there is map. Okay, this map, that rather the soul of geographical studies. Distribution of earthquakes and volcanoes. Okay, distribution of earthquakes and volcanoes, and here you will find that कि earthquake और volcano के distribution में कुछ similarities है. ठीक है, distribution में similarities है. See guys, any information that is presented through map, diagram, figure, chart or anything, as in, you know, it is rather having very deep level of understanding. In a sense, it is loaded with the various information. Now it is your skill how you read that information, है ना. क्या होता है ना, कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन स्ट्रेट क्लियर वर्ड में आपको दी नहीं जाएगी. Many a times you will find information is rather covered in some kind of format or some kind of, you know, presentation. Now it is rather your skill how you read that information, है ना, how you read that information or that particular aspect, जिससे आप reading between the line करके information खींच सकते हो. ठीक है, ग्राफ आई बिलीव ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, मैप तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है. देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेच इट टू एनी अदर डोमेन एज वेल. नाउ अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस क्या है. ओवर हियर दिस मैप इज रादर अर्थक्वेक और वोल्केनोस के पॉइंट. देखो, दिस ग्रे कलर शेडेड एरिया रिप्रेजेंट अर्थक्वेक जोन, frequently prone earthquake zone, and the small dots, volcanic eruption and hot spots are equally being given. I am not going to explain you hot spot, एक बार उसको देख लेना. Now देखो, that you will find a kind of very, you know, intimate similarities between the zone of earthquake and zone of volcano. देखो, अब ये देखो शेडेड जोन है जहां पे आपको वोल्केनो भी दिख रहे हैं. This is equally a shaded zone where earthquake and volcanoes are having rather a common occurrence. Okay, rather a common occurrence. Equally, you will find, okay, there, then you will find इस particular zone में earthquake भी होगा, इस particular zone में volcanoes भी आपको मिलेंगे. ठीक है, so that earthquake and volcanoes are having a kind of very, you know, deep connection. Now, but there is equally a region or zone जहां पे earthquake होगा but volcano नहीं होगा. ठीक है, अब जैसे you will find this Eurasian and African interaction at this particular border, where you will find यहाँ पर earthquake तो है but volcanoes are not there. ठीक है, and there lies a strong reason why volcano is not there. ठीक है, तो volcanoes वाला point वहां पे कनेक्ट हो रहा है दिस वे. ठीक है, दिस पर्टिकुलर केस. नाउ देयर आर सम रीजंस एज वेल वेयर वोल्केनोज आर देयर. ठीक है, वोल्केनोज है बट अर्थक्वेक इज नॉट देयर. ठीक है, तो ये देखो, ये इंफॉर्मेशन है जो मैप से रीड करनी है. नाउ यू कैन कनेक्ट देन विच टाइप ऑफ बाउंड्री रादर इट लाइज इन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ बाउंड्री, है ना. सो इन दिस जोन देखो, यहाँ पे volcano is there but earthquake वाला जोन यहाँ पे जनरली प्रोमिनेंट नहीं है. ओवर दिस रीजन एज वेल volcanoes are there but earthquake is rather not very much observant. Now it's being a duty of yours, being like, you know, an aspirant, कि इस इंफॉर्मेशन को हमको रीड करना है, एनालाइज करना है, रीजन फाइंड आउट करने हैं ऐसे क्यों होगा. ठीक है, सो दिस मैप इज गिविंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट, the concept, that is 4.3, it explains about sea floor spreading. ठीक है, it explains about the sea floor spreading. अब देखो, over in the same explanation क्या है, sea floor spreading that is given by Harry Hayes in 1960s. ठीक है, हैरी हेस ने
1960s में ये इंफॉर्मेशन दी है या ये प्रपोजिशन दिया है, अकॉर्डिंग टू विच द sea floor is not constant, rather it is in the phase of expansion. और ये जो expansion हो रहा है, this is what simply explained under this sea floor spreading. For that matter, he took the help of geomagnetic reversal. Geomagnetic reversal वाला phenomena, paleomagnetism equally that he took help of. Paleomagnetism. And with this, what he established that sea floor is not constant, it is rather in motion, and motion to such an extent कि एक कोई यहाँ पे मिड ओशियनिक रीच से ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा या इनिशिएशन होगा, एंड देन older rock are rather pushed away and younger rock establish themselves in a closer offset margin to that of the mid oceanic ridge. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहां पर एस्टैब्लिश करेंगे यंग रॉक्स और ओल्ड रॉक को ये पुश करेंगे टुवर्ड्स द आउटर मार्जिन, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड ये जो फिनोमेना इट वाज एनविसेज्ड दैट इज सिंपली सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ठीक है, सो इट टुक दिस काइंड ऑफ हेल्प. एक बार इसको भी देख लेना, दैट इज वेल एक्सप्लेन्ड ओवर इन दी NCERTs. Next, the most important one, that is the plate tectonics. See, this plate tectonic that simply involves the movement of plates. Plates are lithospheric slab of a consistent depth, maybe depend on 100 plus minus kilometers. So you will find when the theory that is rather most accepted theory, as in it considered that, see, somewhere around 540 millions of years ago, this continental masses were highly, dispersed. Okay, what happened then? Because these continents are drifting or plates are in motion, what happens? These continents, are moving towards each other, are gaining some, kind of connection between them. Then after some times, क्या होगा? 300 millions of years, एक structure create होगा. And that structure is rather, includes Pangea, all continents, and Panthalassa. And Panthalassa. So Panthalassa is simply all ocean or all water. So Pangea and Panthalassa, it explains you this facts about. Okay, this facts about. So this landmass then continuous stretches 120 millions of years ago. It took a very unified shape or form. Okay, and then what happened with the period of time? You will find ये आज का जो 2025 में हमारे पास जो shape appear हुआ है, that is how it looks like. So according to plate tectonic theory, Earth's surface is by no means, is stable or constant. It rather underwent, and it is going through, or it in the future as well will go through lots of tectonic changes. And this is what this plate tectonic theory is trying to explain. So it is position of continents through the geological past. ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी देख लेना. नाउ अब देखो इसी के सारी डायग्राम में सारी एक्सप्लेनेशन आएगी वैसे, बट नाउ ओ इन दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यू विल फाइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स. एक प्लेट होगी मेजर प्लेट. मेजर प्लेट मीन्स सिंपली दैट प्लेट which has, okay, simply that plate which has large territorial extent. ठीक है, and generally dominated by any one topography like continent या तो ocean. And minor plates are equally there. There are 7 major plates है, and there are hundreds of minor plates as well. ठीक है, hundreds. So minor plates are like those are smaller in size. Those are getting fragmented or the result of fragmentation or breaking of the major plates themselves. ठीक है, जैसे Burmese plate है या you'll find Nazca plate है. There are like John G. Fuca. So there are many as in. So you will find there are 7 plates as in. देखो जैसे यहाँ पे numbering भी कर रखी है. Okay. So Eurasian plate, one largest plate in fact. Then African plate. Then you will find South American plate, North American plate. Then you will find Indo-Australian plate. Then Eurasian तो हो गया. Then Antarctica plate. ठीक है, Antarctica plate.
and okay, yes, so these are the major plates over on the earth surface, and there are minor plates as well. Minor plates देखो नेम भी दिया है यहाँ पे, फिलीपींस, कैरोलीन, कैरिबियन, कोकोस सॉरी, देन नास्का, देन स्कॉटिया, है ना, अरेबियन, hundreds of plates, minor plates are rather there. ठीक है, तो ये सारे minor plates है. अब यहीं पर over here you will find there are some boundaries are equally been mentioned. Guys, do remember, do try to understand कि ये मैप जो है ना बहुत इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, आपको वो इंफॉर्मेशन रीड करनी है, समझनी है. सो देखो, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज यू विल फाइंड कहां पर डाइवर्जन हो रहा है, इन अ सेंस मिड ओशियानिक रीच कहां पर लाई कर रही है. ठीक है, सी यहां पर है मिड ओशियानिक रीच ऑफ द पैसिफिक प्लेट. Okay, this is rather mid-oceanic ridge of the Pacific plate, and over in this margin, that is Great or Pacific Ring of Fire, you will find यहाँ पर क्या बन रहा है, the plate of convergence or transform boundary also. ठीक है, so there, then Atlantic के सेंटर से देखो पास हो रही है this mid-oceanic ridge again, मिड अटलांटिक रीज जिसको बोलेंगे हम. एंड फॉर द केस ऑफ इंडियन ओशियन यू विल फाइंड, देखो इंडियन ओशियन की जो मिड ओशियनिक रीज है दैट इज रादर पासिंग थ्रू लाइक दिस वे. सो फॉर पैसिफिक मिड ओशियनिक रीज इज ऑपोजिट, फॉर अटलांटिक इट राइज एट द सेंटर, एंड फॉर इंडियन इट इक्वली लाइज एट द सेंटर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू कैन रीड बेस्ड ऑन दिस मैप एज वेल. बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये मैप कैरी करता है ना, इसमें से और भी हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, बट अब ये हमारे बियॉन्ड स्कोप वाला पार्ट है. जैसे देखो यहाँ पर हिमालय, ये है हिमालय. हिमालय इज रिजल्ट ऑफ कॉन्व प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दैट इज लीडिंग टू कॉन्वर्जेंट इंटरेक्शन. Next, over in the same chapter, there is another map or figure that explains how Indian plate is rather moving. ठीक है, how Indian plate is rather moving. अब देखो, so you will find कि इंडिया ये जो प्लेट है, it was not the part of Eurasian landmass since ages. It was the part of Pangaea, however, but it was not part of the Laurasian landmass. ठीक है, जिसको अंगारा लैंड भी बोलेंगे. It is rather the part of Gondwana land. It was rather the part of Gondwana land. What happened, however, you'll find it got separated from Gondwana land somewhere around 100 millions of years ago, and then this Indian plate started to drift towards the Eurasian plate. Okay, for 71 million years ago, India was the largest island, okay, over in the Indian Ocean, and it was like early India, 71 million. For it continued its drifting, and 55 million years ago, it was positioned over here. Then at 38 million years, it crosses somehow equator, and then 10 millions of years, you will find 50 to 60 millions of years, you'll find it got rightly collided. Okay, 50 actually millions years, it's got collided, those sediments were compressed, and the process of Himalayan upliftment was actually started. Okay, and this is what this position, okay, that India acquired as of now. और ये जो प्रोसेस है इंडियन प्लेट की मूव करने की टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट इज स्टिल गोइंग ऑन. That is still going on, and that's why you will find the frequent earthquakes over in the Himalayas. That is seismically very active zone as in. ठीक है, landslide common रहेंगे, floods भी common रहेंगे, and that process. Okay, sorry. So yes, this is what trying to explain you the position of India. Then next chapter, that is fifth, chapter 5, geomorphic processes. देखो geomorphic, geo it means earth, and morphic it means that leads to changes on the surface, and processes. So those processes or phenomena lead to changes on the earth surface. Those are the geomorphic processes. अब यहाँ पर you will find एक term दिया denudational processes. ठीक है, denudational processes. Now what does that mean? Denudation. Denudation का meaning होता है to gnaw or scratch or remove. So over on the earth's surface, there are various denudational processes, like you will find weathering,
mass movement and erosion or transportation or transportation. So you will find these are the types of denudational processes. ठीक है, ये है types of denudational processes and this chart simply explains you this process. ठीक है, यहाँ पे देखो एनर्जी की फॉर्म, इरोजन में काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है, वेदरिंग में पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटी इज रादर यूज्ड एंड इन मास मूवमेंट टिपिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट यूज्ड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस डायग्राम या चार्ट या फ्लो चार्ट रादर explains you about. So denudation is very important. इसका weathering erosion ये इसके सब types है. Okay, so be aware about this. Then next over here, अब यहाँ पे देखो एक weathering से related phenomena वाला ग्राफ है and that I find के important है. This graph rather connects the weathering with climate types. What or which type of climate is prone to weathering to what extent. ठीक है, डेप्थ वाइज उसने मतलब उस वे में बताया. सो हाउ क्लाइमेटिक टाइप्स इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ weathering. This is what this graph is just trying to explain you about. अब देखो क्या है, जैसे tropical forest where rainfall is pretty much high, you will find weathering की जो डेप्थ है, मतलब रॉक का जो weathering हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, इट इज एट कंपैरेटिवली हाईएस्ट डेप्थ. देखो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में यही वाला पार्ट है जो सबसे ज्यादा वेदर्ड हुआ है एंड बिकॉज इट इज गेटिंग वेरी मच वेदर्ड, यहां पे सॉइल भी इक्वली रीच होगी या राइट, सॉइल भी इक्वली रीच होगी, पर्टिकुलरली इन द ट्रॉपिकल जोन. इक्वेटोरियल में फिर भी ड्यू टू डेली रेनफॉल सॉइल रादर गेट्स इरोडेड, बट दिस वन इज रादर मच ऑब्जर्व. ठीक है, आई होप दिस ग्राफ इज नाउ यू गाइज आर गेटिंग. Then in the semi desert, ये अगर रीडेबल नहीं है तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एंड डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट यू विल फाइंड, क्योंकि यहां पर वेदरिंग की जो डेप्थ है ना, वेदरिंग ज्यादा हो ही नहीं पा रही है. द रीजन बीइंग सिंपल, बिकॉज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल देयर, है ना. वाटर दैट इज रादर गेटिंग पेनिट्रेटेड डीप इनसाइड इज नॉट प्रेजेंट. हाँ, विंड इरोजन करेगा बट वो कुछ हद तक ही इरोजन हो सकता है, सरफेशियल इरोजन. तो क्या होगी, ड्यून्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर शिफ्ट होगी, रिलोकेट होगी, नॉट नथिंग एल्स. देन यू विल फाइंड फॉर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स और बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम बोलेंगे बोरियल, हियर यू विल फाइंड सी वेदरिंग अगेन इंक्रीजेस in comparison. ठीक है, though it is less than that of tropical region weathering, but फिर भी here weathering की अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एंड अकॉर्डिंगली फिर सॉइल की फर्टिलिटी, अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी एंड एवरीथिंग रादर डिपेंड्स ऑन दिस. क्योंकि डू रिमेंबर वेदरिंग इज द फिनोमेना दैट लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, सॉइल रिक्लेमेशन एंड एवरीथिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू पोलर रीजन देखो यहां पर वेदरिंग की डेप्थ बहुत कम है. ठीक है, सो इट्स मोर और लेस लाइक द डेजर्ट एंड देयर यू विल फाइंड के वेदरिंग का प्रोसेस और फिनोमेना इज प्रीटी मच लेस. सी गाइस, जब भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ग्राफ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आई फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन इज रादर मच हेल्पफुल फॉर यू, है ना, टू अंडरस्टैंड दिस. देन next chapter, that is chapter 6, landforms and their evolution. Landforms and their evolution. अब see this landform and their evolution, वैसे ये बहुत बल्कि चैप्टर है, बहुत एक्सटेंसिव चैप्टर है, जियोमॉर्फोलॉजी का ही केस रहेगा. and here you will find two, that erosional processes are there. Erosional processes like those are led by wind, running water, that is river, glacier, then groundwater and coastal waves. And coastal waves. Here you will find this erosional processes leads to two types of landform. एक होगा erosional
और एक होगा डिपोजिशनल, ठीक है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। सो दिस लैंडफॉर्म, अब जो यहाँ पे ना कुछ डायग्राम्स दिए मैंने वही डायग्राम्स लिए, दैट इज नेचुरल लेवी एंड पॉइंट बार्स, इट इज रैदर यू विल फाइंड दी लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर, ठीक है, landform formed by the river, that is simply erosional type of depositional type of landform, sorry. So here river flow is there. अब ये river flow क्या कर रही है, in its periphery and surrounding it is rather leading to natural levees, maybe stretch for 1 2 3 4 5 meters of height, and then point bar, right, in the meandering loops, because it is changing its course, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ point bars बन रहे हैं, ठीक है. So that is simply point bars. That is what this figure is trying to explain you the case. Then the same river, if it exists the meandering kind of feature, yeah, this is what the meandering है ना, ये meandering है. अब इस meandering में you will find, see यहाँ पे different cases हो गए, जैसे ये Oxbow Lake it is, when river overflows it lose its loop, right, कुछ loops ये लूज कर जाएगी, ठीक है, एंड दोज लूप्स आर नाउ हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक, एग्जांपल कन्वर लेक, दैट इज इन द बिहार, ठीक है, दैट इज रिसेंटली आइडेंटिफाइड एज रामसर साइट. सो दिस वन, एंड इट देन अकॉर्डिंगली लीड टू the various shapes, so meandering growth and cut off loops and slip off and undercut banks, ठीक है. अब slip off bank क्या होगी, slip off bank मतलब जहां पर एक्टिव डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है, that is the slip off bank या concave kind of bank. Then this diagram is explaining you about landforms formed by the groundwater, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कास्ट टोपोग्राफी, ऑल्सो कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी. नाउ देखो कास्ट टोपोग्राफी में कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है. अब इरोजनल लैंडफॉर्म जैसे swallow holes, sink holes, these are what getting developed as in due to process of dissolution. Then you will find that section of collapsing, तो cave collapse is there, ठीक है, तो ये cave बन गया. And then sink holes, देखो यहाँ पे ये वाले sink holes, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, and uvalas और polges are there also, ठीक है. सो लार्ज स्केल क्या कहेंगे इसको, डिप्रेशंस आर रादर uvalas and polges. Now in terms of depositional landforms laid by the groundwater, you will find यहां पे देखो केव बना है, then stalactite, stalagmite and cave pillar, right, जिसको हम cave pillar बोलेंगे, that is equally formed as a depositional landforms for the groundwater, ठीक है. So this diagram is simply explaining you this karst topography. Now the erosional agent is glacier, ठीक है, glacier, it is leading to erosional and depositional type of landform, ठीक है. अब ये जो diagram है that is explaining rather erosional landforms, it is rather explaining erosional landform. अब देखो erosional landforms में कौन से landforms, I am not going to explain you a lot, but yes, कौन से बनेंगे, जैसे horn, right, horn it means the sharp straight edge formed due to the erosion led by the glacier, ठीक है. तो जैसे Matterhorn स्विट्जरलैंड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, over in the Europe as well. Then coal, ठीक है, ये eroded structure रहेगा. Cirques, right, cirques simply जहां पे you will find a depression बनेगा और water का deposition होगा, later lead to cirque lake as well, armchair shaped structure. Then later arete, है ना, this edge, this sharp edges arete as in. Then you will find this, it leads to when glacier moves downward, ये बनाएगा truncated spurs या इसको हम बोलेंगे hanging valley, extension part इसका hanging valley, right, यहाँ पे लिखा है देखो, this one hanging valley, that when it moves to, and here it leads to formation of U-shaped valley. River forms V-shaped valley guys, or glacier forms U-shaped valley.
ठीक है. So you need to be pretty much clear with this difference. So some glacier erosional and depositional form landform by this. ठीक है. देखो next you will find. अच्छा यहाँ पे एक और केस है ना, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आएगा वैसे. ओवर हियर देखो ये है आउटवॉश प्लेन that it leads to the formation. अब here you will find कुछ moraines या जो क्योंकि river is glacier is as it is moving, slowly moving, in fact it is equally eroding, interacting with the rock, the base rock itself. It is now plucking, it is removing the material from the rock itself. ठीक है. So this eroded material in the due course of time led to deposition. ठीक है. अब यहां पर क्या बनेंगे, कुछ डिफरेंट डिपोजिशनल फीचर्स बनेंगे. ठीक है. जैसे टर्मिनल मोरेन्स होगा. टर्मिनल मोरेन्स मतलब एंड मोरेन जिसको बोलेंगे. कुछ कोई मोरेन होगा दैट इज मेडियल मोरेन एज वेल. ठीक है. सो डिपेंड्स ऑन दिस वे. ओवर हियर यू विल फाइंड एस्कर्स. ठीक है. एस्कर्स मतलब कंटिन्यूअस चेन ऑफ a small depositional mountains. Drumlins are like basket of egg topography. ठीक है. क्या होगा, it's simply when we have a top view of this, ये छोटे छोटे ऐसे you will find the small hilltop topographies are rather getting developed over in the glacier outwash plain वाला region. These are to be known as drumlins there. ठीक है. Basket of egg topography because it looks like a basket of egg. ठीक है. So that's way. Then और कहां पे ड्रमलिन, आउटवॉश प्लेन, एस्कर्स एंड दिस थिंग. ठीक है. सो दैट ये जो लेक दिख रहा है आपको वैसे यहां दिया नहीं है बट दैट इज ए केटल लेक. ठीक है. सो दिस डायग्राम, दिस मैप फिगर रादर एक्सप्लेन्स यू a lot many things. जहां से भी अगर ये भी याद रख लिया ना तो आई एम अश्योरिंग यू, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द ग्लेशियर, तो हम बहुत सारे नाम से ऐसे भी ले सकते हैं. या विच ऑफ द फॉलोइंग लेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म और ग्लेशियल लैंडफॉर्म बाय दिस केस. नेक्स्ट that it unit is for climatology. See, this unit is for climatology and this climatology is one of the very much important branch. ठीक है. Very important branch in fact. Chapter 7 composition and structure of atmosphere, it deals with the atmosphere. And what is atmosphere? It is simply an envelope of air. अब देखो over in this graph there you will find the structure of atmosphere that could be explained. On x-axis temperature in degree Celsius have been given and on y-axis altitude have been given in kilometers. ठीक है. So altitude. अब यहाँ पर क्या होगा, there you will find जैसे 10 किलोमीटर पे देखो, अभी इसको अगर रीड करना है, मैं क्लास में जनरली इस ग्राफ से ही एक्सप्लेन करता हूँ द होल एटमॉस्फेयर बिकॉज दिस ग्राफ हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एम्बेडेड विद इन इट. ठीक है. सो देखो अब जैसे इंक्रीज इन हाइट इज देयर 0 kilometer at surface and as height increases you will find temperature decreases, है ना. So as height increases temperature decreases. This phenomena is a lapse rate phenomena. That this phenomena is simply a lapse rate phenomena with increase in height temperature decreases and at somewhere around the troposphere end temperature is minus 60 degrees. फिर उसके बाद आएगा ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज may stretch for 5 to 10 kilometers as in and or maybe further more and then यहां पर क्या होगा, constant temperature. देखो टेम्परेचर क्या है, constant even with increase in height. Okay. And you will find next it's then started to increase. अगर देखोगे अब इस लेयर में क्या हो रहा है, that layer is stratosphere that is stretched for like in 20 kilometers to 50 kilometers almost. You will find with increase in height temperature decreases. देखो troposphere में increase in height decrease in temperature, inverse proportionality, lapse rate. In stratosphere increase in height decrease in temperature. This phenomena is inversion of temperature. Inversion of temperature, that is simply this phenomena that you will find in the stratosphere itself. Okay. Next अब क्या होगा, stratosphere you will find here ozonosphere also, है ना, 16 to 35 kilometer ozonosphere. Next is you will find stretch up to like a stratopause,
maybe 5 to 10 kilometers as in, and then there start one of the coldest layer also, mesosphere. It stretch from 55 kilometer to 80 kilometer at the top. Yeah, so 80 kilometer of the top. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर हाइट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. Yeah, temperature decreases, same phenomena as like lapse rate itself. ठीक है, that is rather a lapse rate phenomena. Okay, then क्या होगा, again you will find for a period of time, yeah, height in fact, mesopause, pause in a sense, temperature gets pause, no change, mesopause, and then temperature picked beyond the limit, that this layer is exosphere. इसी में पार्ट आएगा thermosphere also, है ना. Temperature now it went almost around, or it goes almost around to the thousands of degree और possibly उससे भी ज्यादा, है ना. आउटर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है हमारा वो उससे भी कहीं ज्यादा होगा. सो simply this graph is, I believe, rather explains the whole of atmosphere, है ना. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो हम यहाँ से इससे रीड कर, इससे भी कई ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ से बताई है. Density, molecule, and almost everything you will find rather connects with this. Then next, here you will find phenomena that summer solstice or winter solstice as well. देखो, solstice is like simply what? Solstice क्या होता है? When earth or either a day is longer or night is longer. ठीक है? Means imbalance is there. Right? That is what a solstice. अब summer solstice में क्या होगा? That condition when day is longer than night. And here you will find Tropic of Cancer, 23.5 degree, as rather this perpendicularity as well. ठीक है? So 90 degree perpendicularity of the sun rays, and the solar radiations are inclined or almost no present at 0 degree south pole. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये समर सॉल्स्टिस. अब विंटर सॉल्स्टिस में क्या होगा, रिवर्स होगा. परपेंडिकुलरिटी इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव 43 ऑलमोस्ट अराउंड, एंड नॉर्थ पोल रादर रिसीव्स नो रेडिएशन एट ऑल. ठीक है, दैट इज सिंपली दिस समर सॉल्स्टिस कंडीशन जो यहां पे एक्सप्लेन की है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर दिस इज हीट बजट. ओके, हीट बजट. देखो ये फिनोमेना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बजटिंग, अगर इफ अर्थ वोंट डू बजटिंग, यू विल फाइंड अर्थ वुड रादर लूज इट्स होल एग्जिस्टेंस. ओके, सो इन ऑर्डर टू कीप ए बैलेंस, यू विल फाइंड अब क्या होगा, यहां पे दो फिनोमेना वर्क करेंगे. एक फिनोमेना होगा इनकमिंग बैलेंस, एक फिनोमेना होगा आउटगोइंग बैलेंस. इनकमिंग एंड आउटगोइंग. तो अब देखो, दिस इज सिंपली एक्सप्लेनिंग यू इनकमिंग एंड आउटगोइंग बैलेंस. क्या हो रहा है, 100% जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ, यू विल फाइंड जो सन से तो 100% नहीं है, सन से हार्डली 1/2 बिलियन पार्ट आ रहा है हमारे पास. ठीक है, द रेस्ट इज रादर स्प्रेड इन द होल सोलर सिस्टम. सो व्हाट एवर दैट 1/2 billion part, that is 100% for us. Okay, so all of this 100%, clouds, atmospheric components reflect 27 by clouds. Then you will find 2% itself reflected back by the earth surface. It is rejecting rather the surface, and then you will find some energy, a form of energy rather gets scattered to the space. Kitna unit? 6 unit. Okay, or 6%. And ultimately 14 unit is absorbed by the atmosphere. And then क्या होगा, 34 plus 17, that means 51 unit is absorbed by the earth surface. ठीक है, तो earth now has in total 14 plus 51 units of energy with it. ठीक है, अर्थ के पास कितनी एनर्जी है, यू विल फाइंड 14 और 57, है ना, क्योंकि 27 प्लस 2 29 एंड प्लस 6 35 इसने ऑलरेडी रिटर्न कर दिए टू दी स्पेस. ठीक है, सो अर्थ इज नॉट हैविंग 35 यूनिट, बट डेड जो है अर्थ का, दैट इज नाउ विद दी 65 यूनिट्स. अब अर्थ, हाउ अर्थ एग्जिस्ट
और ensure the 65 यूनिट एनर्जी रिटर्न टू द स्पेस, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो बजटिंग हो गया ना। तो एनसीईआरटी में ये जो चार्ट है, दिस ग्राफ है, रादर आई वुड से ग्राफ इन द सेंस डायग्राम फिगर व्हाटएवर यू विल फाइंड, ये एक्सप्लेन कर रही है कैसे अर्थ रेडिएट कर रही है, कैसे अर्थ रिटर्न कर रही है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। ठीक है, लॉन्ग वेव देखो 23 यूनिट अर्थ रेडिएट्स टू द एटमॉस्फेयर फर्स्ट। अब इस 23 यूनिट्स में 6 यूनिट्स रादर बी केप्ट विद द एटमॉस्फेयर एंड देन 17 इज विद द स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में डायरेक्टली 17 तो जा रही है, बट 6 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रह रही है। नेक्स्ट यू विल फाइंड turbulence and convection. Turbulence and convection, 9 unit is what reflected by this process and whole 9 unit is absorbed by the atmosphere first. Then 19 units earth क्या कर रही है, फिर से कंडेंसेशन के फॉर्म में रिलीज कर रही है। तो इन टोटल 23 प्लस 9 प्लस 19 51 यूनिट अर्थ ने क्या कर दिया, सरफेस ने तो रिलीज कर दिया। अब एटमॉस्फेयर ने क्या किया, 19 यूनिट को ट्रैप कर लिया, 9 यूनिट्स को भी ट्रैप कर लिया, और ये जो 6 यूनिट थे ये भी ट्रैप कर लिए। एंड इन एडिशन एटमॉस्फेयर इनकमिंग में 40 यूनिट्स भी तो लेकर बैठा है। या यू विल फाइंड एटमॉस्फेयर नाउ नीड्स टू रेडिएट 48 यूनिट्स। अगर नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर वुड रादर गेट ग्लोबली वार्म्ड या ग्लोबली कूल्ड, है ना, अगर इम्बैलेंस अगर अकॉर्डिंगली होगा। सो एटमॉस्फेयर देन रिफ्लेक्ट बैक दिस 48 यूनिट्स टू द एटमॉस्फेयर space, sorry, and then ultimately it keeps a balance. So 48 plus 17 you will find 65 radiated back to the space. I hope getting it. Yeah, so ये phenomena है heat budgeting phenomena. Okay, this is very much confusing topic है, but I tried my best कि मैं आपको quick explanation में explain कर दूं, है ना, ज्यादा टाइम दे नहीं सकते हम, but yes. Now, अब this figure it explains you latitudinal variation in net radiation balance. अब देखो क्या हो रहा है कि अर्थ सरफेस पे जो रेडिएशंस आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, जो ये ओवरऑल अमाउंट आ रही है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट कांस्टेंट. Latitude wise it is highly variable, just like say for example how this explains you 0 degree, this is what on x axis you will find latitudes. ठीक है, latitudes, and on y axis energy received as in 0 degree equator rather you will find receives one of the highest amount of energy. ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी, देखो ये क्या है, एनर्जी रिसीव्ड, दिस ग्राफ, एंड रेड कलर इज सिंपली एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस. ओके, सो एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस. अब क्या हो रहा है, यू विल फाइंड इक्वेटर, देखो क्या कर रहा है, इक्वेटर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है या रिसीव कर रहा है, इससे कम वो रिलीज कर रहा है, एंड दिस गैप राइट रादर मेक्स इट इन द सरप्लस, है ना, सरप्लस. व्हाट हैपन हाउएवर एट ट्रॉपिक 30 to 40 ये वाला पार्ट में देखो, ट्रॉपिक पे भी क्या हो रहा है, काइंड ऑफ सरप्लस, एनर्जी रिसीव्ड इज दिस मच अमाउंट और एनर्जी रेडिएटेड इज दिस मच. तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में. ट्रॉपिक क्या टॉकिंग अबाउट. And when it comes to polar region or furthermore 70, 80 and 90, देखो यहां पर energy received is less, but energy radiated is high, and due to which when received is less than radiated, ना, or emitted, क्या होगा, that would lead to deficit, ना, yes, it would lead to deficit, and that is what exactly polar region में energy is rather in deficiency, and this is the major reason. क्या होगा, कहीं अर्थ सरफेस पे किसी एक रीजन पे सरप्लस है, किसी एक रीजन पे डेफिसिट है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बजटिंग करना इज देन मच नीडेड. दैट इज व्हाट दिस ग्राफ is simply explaining you. But I hope guys, you guys are getting this with this explanation. Next, then you will find यहाँ पे further graphs है, देखो now
This is what the graph that the distribution of surface air temperature in the month of January. अब देखो सिंपल है, मंथ ऑफ जनवरी में क्या होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड परपेंडिकुलरिटी इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन, एंड यहां पर सोलर रेडिएशन की विजिबिलिटी है ऑन द साउथ पोल, नॉर्थ पोल डज नॉट हैव सोलर रेडिएशंस, ठीक है, नो एंड इंक्लाइन रेडिएशंस ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यू विल फाइंड द थर्मल इक्वेटर. देखो इक्वेटर दो टाइप के इक्वेटर मिलेंगे, वैसे और भी इक्वेटर बना सकते हैं. इक्वेटर जनरली जो लैटिट्यूडिनली पोजीशन पे होगा, थर्मल इक्वेटर जो टेम्परेचर के बैलेंस पे वर्क करेगा, ठीक है. तो थर्मल इक्वेटर रादर शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स द साउथ पोल, है ना. It shifts more. It is expected to be at the equator, 0 degree ideal case में, but it is now shifting more towards this. So जहां पर भी you will find continent is there, temperature anomaly is more, है ना. And whenever ocean is there, you will find a balance is rather less. ठीक है, देखो continent आएगा ये dip करेगा, right? Continent आएगा ये dip करेगा, continent आया ये dip किया, okay? Accordingly you will find, but ocean पे uniformity is rather there, right? This is 0 degree or thermal equator, 20 degree, then 10 degree, then 0 degree, and then further onward. But when it comes to north hemisphere, अब देखो यहां पे कंडीशन क्या हो रही है, यहां पर 20 degrees, 10 degrees, 0 degrees, -12, -25 degrees, maybe temperature is going up too, है ना. And that's why, because north hemisphere sea has a huge presence of land mass, यहां पे जो isotherms बन रहे हैं, their deviation is way more than in the south hemisphere, है ना. That is what, you know, इस पर भी UPSC has already questioned this on this deviation as well. So this is what this isotherm map of January. Next is isotherm map of month of July. You will find, अब देखो मंथ ऑफ जून जुलाई में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरिटी इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलरिटी है. नॉर्थ पोल पे सोलर रेडिएशंस आर देयर, ठीक है, सन रेज आर देयर आर नो रेज ओवर ऑन द साउथ पोल, ठीक है, एंड यहां पर इंक्लाइन रेडिएशन है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अब क्या होगा, यू विल फाइंड थर्मल इक्वेटर देखो कहां शिफ्ट हो रहा है, यू विल फाइंड थर्मल इक्वेटर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, या, एंड अगेन ओशन का पार्ट जो आएगा देयर यू विल फाइंड इट लाइज क्लोजर, है ना, इट हैज ए लेस वेरिएशन, बट एज सुन एज इट मैचेस विद द कॉन्टिनेंट, इसमें वेरिएशन क्या होगा, और ज्यादा वेरिएशंस होगा. सी डू रिमेंबर कि आइसोथर्म में वेरिएशंस कैसे आते हैं, जहां लैंड मास आएगा टेम्परेचर में स्ट्रिप वेरिएशंस होगा, जहां ओशन आएगा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी. सो यू विल फाइंड टेम्परेचर 20 डिग्रीज 10 डिग्रीज 10 डिग्रीज, ठीक है, यहां पर ये टेम्परेचर जा रहा है, 0 डिग्री का केस ही नहीं बन रहा क्योंकि टेम्परेचर इज रादर हाई. बट फॉर द केस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर 20 डिग्री 10 डिग्री एंड यू विल फाइंड फर्दर 0 डिग्री फॉर अंटार्कटिका एंड दिस वन, क्योंकि यहाँ पे लाइट जा नहीं रहा, है ना, विंटर सीजन है. देन you will find the range of temperature between January and July, ठीक है. अब range of temperature क्या होगा, that is simply difference between month of January average temperature, month of July average temperature, and you will find that in and around equator ये difference बहुत कम है, 3 degrees, है ना. in and around equator ये बहुत कम difference होगा, but जैसे जैसे you guys will move towards the pole, 10 डिग्री का डिफरेंस है मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ जुलाई में, एंड ओवर इन द नॉर्थ पोल 30 डिग्रीज ओवर हियर, ओवर इन द नॉर्थ अमेरिका 40 डिग्रीज, ओवर इन द मंगोलियन डेजर्ट 50 डिग्रीज तक का डिफरेंस है. यू विल फाइंड रादर दैट इज रिफ्लेक्टेड कि जनवरी और जुलाई में, है ना, मतलब समर और विंटर में, राइट, यू विल फाइंड इतना ह्यूज टेम्परेचर है, पर्टिकुलरली नॉर्थ हेमिस्फीयर. साउथ हेमिस्फीयर में ये डिफरेंस क्या है, लेस है, बट नॉर्थ हेमिस्फीयर में इट इज वेरी हाई. ओके, आई होप गेटिंग. देन नेक्स्ट चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड वेदर सिस्टम. अब ओवर हियर देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, दैट इज आई बिलीव टेबल इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर क्या है, लाइक बेस्ड ऑन हाइट. सो यू विल फाइंड सी लेवल पे प्रेशर इतना है एंड टेम्परेचर इतना है. 1 किलोमीटर हाइट पे प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस. 5 किलोमीटर हाइट पे प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर इक्वली डिक्रीजेस, and 10 kilometer decrease and decrease. So we can establish one fact, height is inversely proportional to pressure, it is inversely proportional to temperature also, है ना. देखो see, that is what it is
ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस चार्ट। ये इन्फरेंसेस ड्रॉ करने होंगे तभी तो हमको सारी चीजें समझ आएगी, है ना, एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन। सो नाउ here the distribution of pressure in the month of January and you will find, देखो month of January में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर, है ना। अब विंटर में टेम्परेचर कैसे होता है, लेस, तो प्रेशर भी क्या होगा, लेस प्रेशर, है ना, एंड अकॉर्डिंगली कंडीशंस आर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जुलाई में, सॉरी जनवरी में, सॉरी माय मिस्टेक, समर, ठीक है, समर में टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, तो प्रेशर भी क्या होगा, रेट अकॉर्डिंगली। अब देखो यू विल फाइंड यहां पर प्रेशर जा रहा है 115 मिलीबार, ओके, ओवर हियर एंड मे बी फर्दर मोर over in the northern hemisphere 115 and at maybe some point you will find यहां पर देखो हाई प्रेशर जोन बन रहा है इन दी मंगोलिया, ठीक है, मंगोलियन इस वाले पार्ट में 1030 कंडीशंस, ठीक है। तो लो टेम्परेचर कंडीशंस, जनरली लो प्रेशर कंडीशन गेटिंग डेवलप्ड ओवर इन द नॉर्दर्न, सॉरी सदर्न एंड नॉर्दर्न, ठीक है। नेक्स्ट वाला ग्राफ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई इट मींस कि परपेंडिकुलरिटी अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ओके, एंड अकॉर्डिंगली लो प्रेशर्स यू विल फाइंड कि क्या होंगे, डेवलप्ड होते जाएंगे, ठीक है, लो प्रेशर्स एज इन यू विल फाइंड गेटिंग डेवलप्ड, और इसके करस्पॉन्डिंग हाई प्रेशर्स कहां बनेंगे, इन सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। सो विंड्स मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड्स क्या करेंगे, देखो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विंड्स आर मूविंग फ्रॉम दिस मार्जिन टुवर्ड्स दिस मार्जिन, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये क्या करेंगे, जहां भी बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली दे आर मूविंग एंड देन लीडिंग टू दिस कंडीशन। नाउ दिस फिगर इज लाइक ए जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर और विंड पैटर्न। अब ओवर हियर you will find, see that rather reflects the atmospheric cells or circulation, equator to tropic जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई बन रहा है, ओके, सब ट्रॉपिकल हाई, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जहां पे दो ट्रेड विंड्स इंटरसेक्ट होंगे, ओके, दिस रीजन यू विल फाइंड इट लीड्स टू हेडली सेल फॉर्मेशन, ठीक है, हेडली सेल फॉर्मेशन बोथ इन बोथ द हेमिस्फीयर। देन फ्रॉम subtropical high to subpolar low, right, this is SPL, it means subpolar low, both the region you will find there lies the feral cell, there lies the feral cell, and then subpolar low to polar region you will find यहां पर बनेगा polar cell, ठीक है, यहां पर बनेगा polar cell। अब the wind those are rather moving in the region, देखो in north hemisphere tropical region northeast trade winds are there, in south hemisphere tropical region southeast trade winds are there, right? In north hemisphere over in the polar region देखो क्या बन रहा है, westerlies, यहां पर भी क्या बन रहा है, southern में westerlies, है ना, and then in the polar region there are polar easterlies, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, सॉरी डायग्राम मान लो, फिगर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, याद रखनी होगी कि प्रीलिम्स में इससे कनेक्टेड बहुत बार क्वेश्चंस आए, ठीक है। सो यू गाइज नीड टू रिमेंबर देम। देन नेक्स्ट इज लैंड एंड सी ब्रीजेस, ठीक है, दैट इज व्हाट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब लैंड एंड सी ब्रीजेस, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे टाइम, यू विल फाइंड, सी यहां पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ऑन the sea surface is low because water takes longer to gets heated, तो low temperature है, pressure बन गया high, and land in comparison gets heated faster, तो high temperature बन गया, इसमें pressure बन गया low। अब winds now moves from high pressure to low pressure, right, so these winds are to be known as sea breeze because they are having their origin on the or at the sea, right। अब ये क्या करेंगे, circulation complete करेंगे, right, up in the atmosphere they will complete the cycle, ठीक है, return। What happened during the night time, condition would be different। अब लैंड क्या करेगी, क्विक एनर्जी रिलीज कर देगी जिससे टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, एंड प्रेशर वुड बी हाई प्रेशर देयर, ठीक है। सो विंड मूव्स टुवर्ड्स एट द सी जिसमें अब लो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो विंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस विंड्स आर टू बी नोन एज लैंड ब्रीज क्योंकि ये लैंड से आ रहा है, और फिर ये साइकिल अपर एयर सर्कुलेशन में कंप्लीट होगा, एंड दैट इज हाउ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेस आर मच कनेक्टेड, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कहां पर होगा, ओवर ऑन दी कोस्टल रीजन, ठीक है। सो कोस्टल पार्ट्स पे ये। नेक्स्ट इज यू विल फाइंड द डिफरेंस साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, ठीक है, एंटी साइक्लोन्स भी क्या होगा,
प्रेशर सिस्टम जैसे साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, यू विल फाइंड प्रेशर कंडीशन एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर, एंड एट एंटी साइक्लोन इट इज हाई प्रेशर, ठीक है। देन पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर, एंड साइक्लोन कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, एंड एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन दी रिवर्स वे, ठीक है। तो इसका नाम ही एंटी साइक्लोन है क्योंकि साइक्लोन के अपोजिट है, तो इसीलिए कोई एक याद रख लो, यू कैन ऑटोमेटिकली रिमेंबर दी नेक्स्ट थिंग also, ठीक है। नाउ दिस साइक्लोन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रिजल्ट ऑफ फ्रंटल फॉर्मेशन, ठीक है। पोलर फ्रंटल थ्योरी है जो अब मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फाइन, बट यहां पर यू विल फाइंड कि फ्रंट फॉर्मेशन होगा कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट, ठीक है, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट एंड द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑक्लूडेड फ्रंट यू विल फाइंड जहां पर there is possibility of forming extratropical cyclone, extratropical cyclone, ठीक है। सो दिस वन एक बार इसको गो थ्रू करना, इतने कम टाइम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसे पूरा। नेक्स्ट दी tropical cyclone. A tropical cyclone that is usually within the tropical region 0 to 30 degree north and south. Now here you will find tropical cyclone is made up of different conditions and different components. देखो अब tropical cyclone इसका रेंज हो सकता है, जैसे अगर ये 0 किलोमीटर मान ले हम, तो 300 to 400 या 500 किलोमीटर और मे बी मोर, राइट, इतना इसका स्ट्रेच है। तो इट कुड बी 1000 और 1200 किलोमीटर इन डायमीटर। इसका एक आई होगा दैट इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड दैट इज रादर वेरी स्टेबल, वेरी कूल, वेरी कांस्टेंट। देन नेक्स्ट टू आई देयर इज आई वॉल, ठीक है, एंड आई वॉल इट लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस विंड्स और लाइक दिस एयर, राइट। यहां से होगा आउट मूवमेंट, it engulfs the larger part further. You will find यहाँ पे रेन बैंड्स बनेंगे जहां पे कंटिन्यूअस है ना रेनफॉल लीड होगा ओवर इन दिस रीजन। आई इज रादर कांस्टेंट क्योंकि यहां पर है सबसाइडिंग वार्म एयर, सबसाइडिंग वार्म एयर है, एंड इट मे स्ट्रेच अप टू ट्रोपोपॉस, ठीक है। दिस डायग्राम इज रादर कंफ्यूजिंग, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। देखो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस है और निम्बोस्टैटस है, एनबी है ना, CUNB, इट मींस क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्टैटस, दोस आर टाइप्स ऑफ द क्लाउड। सो रेन बैंड जहां पे रेन जनरली ऑब्जर्व्ड होगा, रेन फिनोमेना लीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। नाउ अब देखो दिस टेबल एक्सप्लेन्स यू द climatic grouping led by the Köppen. He was of the quantitative revolutionary approach and where he used the alphabet to represent the types of climate, ठीक है। तो इसने क्या किया, ABCD, right, H, these are these alphabets or letters he used, and there each letter represent a different type of climate. A tropical, B dry, C warm, D cold snow forest, E cold, and H is high altitude, ठीक है, that type of forest, and for each of them some conditions are what being given, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि कोपेन ने यूज क्या किया, क्योंकि when I was in school days I was pretty much confused कि ये ABCD है क्या यहाँ पे, है ना। So ABCD simply for the purpose of making it simple, the scheme simple, he uses the alphabet for the purpose of representation, ठीक है। Then over here he further divided each of these types into subtypes. क्या होगा, A is divided into 3, tropical wet AF, tropical monsoon AM, tropical wet and dry AW, ठीक है। और यहां पर क्या रहेगा, इसमें AF में नो ड्राई सीजन, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट या रेन फॉरेस्ट। AM मॉनसूनल, जहां पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम्स होगा, ड्राई सीजन, एंड AW इज विंटर ड्राई सीजन, जिसको हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलेंगे। देन ड्राई क्लाइमेट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर, स्टेपी एंड डेजर्ट, and they are further divided based on their location, subtropical steppe या mid latitude steppe and subtropical desert या तो mid latitude desert, represented by different notation. You need not need to remember. अगर आपका GS है और ये ऑप्शनल नहीं है तो need not need to remember. ऑप्शनल में आपको वो भी लॉजिकली ये चीजें याद रख सकते हो, so that's not a big deal. Then C, warm temperate mid latitude climate, wherein it is divided into 3, humid subtropical CFA, Mediterranean CS and marine west coast CFB, ठीक है। So here no dry season, dry hot summer and
नो ड्राई सीजन इक्वली, ठीक है। तो इसको अदरवाइज हम चाइनीज टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट वी कंसिडर. Then D, snow, cold, snow forest, humid continental DF and subarctic DW. E divided into two, tundra and polar ice cap, ठीक है। तो इसको भी रिप्रेजेंट होगा ET and EF. And last H or highland, where H represent highland region with the snow cover, ठीक है। तो उसको accordingly जैसे Andes या Alps या Himalayas, you will find mountain peaks पे this type of climate rather observed. Then next is hydrosphere या oceanography. This graph figure explains you hydrological cycle, and that you are much aware about. Hydrological cycle is simply when water, when insolation is there, due to which evaporation leads to upliftment of this water vapor, then it leads to cloudal formation, then there is condensation leads to precipitation leads to surface runoff lead to further the accumulation, and the cycle repeat itself. That is to be known as hydrological cycle, जिसको हम generally water cycle भी बोलते हैं. Okay, this one. Next, अब oceanography में oceanic floor, relief features of the oceanic floor. देखो यहाँ पर you will find continental shelf. This is continental part. The sloping comparatively less relief feature, जिसपे slope gentle slope होगा, that is to be known as continental shelf. You can अच्छा यहीं पे देखो ये थोड़ा सा visualize हो जाएगा. Then where continental shelf ends, that is to be known as shelf break. Okay, so shelf break. Then you will find this shelf break rather it leads to the continental slope, जो slopey end पे जाएगा, ठीक है, slopey end पे, so continental slope, and there you will find यहां पर जो डिपोजिशन होगा इट लीड्स टू कॉन्टिनेंटल राइज. ओके, कॉन्टिनेंटल राइज इट लीड्स टू. नाउ बियॉन्ड दिस स्लोपी रीजन और राइज रीजन, देखो अब यहां पे क्या दिख रहा है. हियर यू विल फाइंड यहां पे कुछ ग्योट्स बनेंगे, सी माउंट्स बनेंगे. ग्योट मतलब क्या, फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर. सी माउंट्स मतलब जो अर्थ सरफेस पे माउंटेन्स है वैसे ही अंडरग्राउंड अंडर वाटर माउंटेन्स है. अबाइजल प्लेन जिसको हम सी फ्लोर्स बोलेंगे. एंड देन यू विल फाइंड दी trenches, deep trench like Mariana Trench, like Java Trench, Philippine Trench या और भी trenches है ना. So those are what you will find are getting developed there. That is what the relief features of oceans. Now over in the ocean, when you try to draw its ocean temperature versus depth map, it gives us a very different concept. ठीक है, that it gives us a different concept. अब ये different concept क्या होगी, देखो. X axis increasing temperature 0 to 24 जैसे यहाँ दिया है, and then depth, right, depth 0, 50, 1000, 1500 and accordingly. अब यहाँ पर क्या है, at surface temperature देखो 20, 22, 25 degrees, what is we consider it. When depth increases up to, you will find 200 to 300 meters, ठीक है, 200 to 300 meters. टेम्परेचर तो ये कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब यहाँ पे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेगा. व्हाट हैपन हाउएवर आफ्टर 200-300 मीटर्स देयर इज सडन डिक्लाइन इन द टेम्परेचर, राइट. कि पहले जो टेम्परेचर 25 था या 24 था वो सडनली या लाइक बाय 1000 मीटर्स इट हैज नाउ रीच्ड अप टू 3 to 4 डिग्रीज, है ना. 3 to 4 डिग्रीज के आसपास ये आ गया है, राइट. सडन चेंज और ड्रास्टिक चेंज, एंड देयर आफ्टर you will find it remains constant further, ठीक है. So temperature more or less remain constant over at the high depth after 1000 meters. This phenomena wherein 300 या 200 meters to 1000 meters where temperature का ये जो behavior है sudden decline हो रहा है ना, sudden change हो रहा है, it is to be known as thermocline region, okay, or thermocline itself. I hope you guys are getting this stuff, thermocline region. And phenomena is equally thermocline as. Next है, you will find the spatial pattern of surface temperature of the
ओशन। तो इन जनरल ओशन में सरफेस टेम्परेचर की कंडीशंस क्या क्या होती है, देयर यू विल फाइंड, देखो अराउंड इक्वेटर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 28 डिग्रीज या हाई है ना, वो भी नॉर्थ और साउथ में देयर लाइज है 1 2 3 डिग्रीज का डिफरेंस। देन 28 टू 25, 25 टू 20, 15, 10 and 0 degrees. Are you getting? So how temperature towards the pole gets decrease है ना, तो ये भी एक important है। and same goes for southern hemisphere as well, but do remember southern hemisphere में ये जो decrease होगा ये comparatively fast होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे land mass कम है ना, oceanic mass यहाँ पे ज्यादा है, so that makes the case। then surface salinity of the world oceans, surface salinity of the world oceans, and there you will find oceanic salinity, salinity means amount of salt dissolved in the water, ठीक है। so here you will find at equator surface salinity is rather 35 36 in and around है ना, 35 36। at tropics is salinity you will find, जैसे अटलांटिक में देखो 37 है, यहाँ पे 35 34 है ना, यहाँ पर इन द सदर्न हेमिस्फीयर 36 35। सो कंपैरेटिवली ट्रॉपिक पे सैलिनिटी अ बिट हायर है, बहुत ज्यादा हायर नहीं है, अ बिट हायर है, 1 or 2 नॉचेस, ओके। एंड देन टुवर्ड्स द पोल यू विल फाइंड सैलिनिटी इज 33 34 और इवन लाइक लेस, ओके, ओवर इन द रीजन। सो इट डिपेंड्स ऑन कि किस लैटिट्यूड पे हम स्टडी कर रहे हैं सैलिनिटी डिक्रीज। सो वी कैन एस्टैब्लिश वन फैक्ट, विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड है ना, विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड सैलिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है, दैट वी फैक्ट वी कैन एस्टैब्लिश दिस केस। देन नेक्स्ट चैप्टर इज movements of ocean water, oceanography। here you will find कुछ 3 important terms रहेंगे, जैसे tides, waves and ocean currents। ocean current। so here देखो motion of waves and water molecules। here you will find, देखो ये जो वेव्स है इसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, मूवमेंट इज जस्ट लाइक व्हाट वाटर पार्टिकल्स है ना, एनर्जी इज व्हाट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ टर्म्स दी है, क्रेस्ट फॉलिंग, ट्रफ राइजिंग, ठीक है। सो क्रेस्ट एंड ट्रफ, ट्रफ मतलब लो लाइंग डिप्रेशन, क्रेस्ट मतलब अप लाइंग पार्ट है, ओके। सो अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड वेव्स moves, that is what it is trying to explain। बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें कोई देखना ऐसा नीड नहीं है। दिस इज व्हाट अबाउट टाइडल फॉर्मेशन, टाइड्स। There are 3 conditions, those are what being given over here। you will find the relationship between gravitational force and tides। देखो sun is over here in all the 3 diagram, moon is between earth and sun, and now when sun and moon are applying their force from a same direction on the earth, देखो tidal की जो intensity है या bulge है वो ज्यादा है। but if this is they are lying on the same edge, you will find कि tidal का bulge opposite side पे भी ज्यादा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है। देन यू विल फाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड व्हेन ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर बैलेंस, यू विल फाइंड क्या होगा, टाइडल बल्ज एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में भी यहाँ पे वर्क करेगा। दैट इज व्हाट इट इज लीडिंग टू द टाइडल फॉर्मेशन। सो सिंपली टाइडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है ना, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो। इस पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी वी शुड हैव दैट क्लैरिटी। देन दिस इज व्हाट द वर्ल्ड मैप ऑफ मेजर ओशन करंट। यू नीड टू रिमेंबर, यू नो, ओशनिक वाइज दिस मैप नीड्स टू बी प्रीटी मच imbibed and impressed in your mind। कभी भी आपसे कोई अगर पूछ ले कि हाँ ड्रॉ द वर्ल्ड मैप ऑफ ओशन करंट, यू गाइस शुड हैव you know that skill कि आप इसको और remembering as well to remember this map as well, ठीक है। देखो अब ना नॉर्थ अटलांटिक 2 वे होंगे, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। अटलांटिक में सो एक करंट होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देन गल्फ स्ट्रीम, देन एक ब्रांच जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एक ब्रांच डाउनवर्ड आएगी दैट इज कैनरी करंट, एंड द लूप कंप्लीट दैट इज टू बी नोन एज जायर, GYRE, जायर। देन साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ब्राजीलियन करंट रहेगा, then you will find west wind drift, then Bagula current, and the cycle continues itself।
नेक्स्ट फॉर इंडियन ओशन, साउथ इक्वेटोरियल करंट, एग्युलास करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मर्ज होगा एंड कोल्ड होकर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनाएगा, ठीक है। नॉर्थ इंडियन ओशन में केस डिफरेंट है क्योंकि यहां पे कोई कोल्ड वाटर आ नहीं रहा है ना, सो हियर यू विल फाइंड ओनली वार्म करंट रादर फाइंड, ओके, ओनली वार्म करंट इज रादर observed over in the North Atlantic. That is a unique condition. Then for Pacific North, equatorial current, Kuroshio current, Oyashio current, and this Oyashio current continues to the North Pacific drift. फिर ये कैलिफोर्निया करंट बनाएगा, एक इसका ब्रांच अलास्का में जाएगा, and then you will find it continued journey like the North equatorial current and the cycle completes. And for South equatorial current, देखो ये फ्लो करेगा like यहाँ पे will find ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, देन ये वर्ल्ड फेमस हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट बनाएगा एज ए कोल्ड करंट एंड देन कंटिन्यू द केस, राइट। दिस मैप गाइस यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू ड्रॉ इट मेनी टाइम्स कि आपको याद हो जाए, ठीक है। नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, व्हिच इंक्लूड्स द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। लाइक यहाँ पर देखो हॉटस्पॉट्स दिए, कुछ याद रख सकते हो, जैसे इंडिया में हॉटस्पॉट ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, दिस टू। इन श्रीलंका द सिंह राजा फॉरेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पेनिनसुलर मलेशिया, फिलीपींस इज ए हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है, मतलब अंडर थ्रेट एंड डेंजर। देन नॉर्दर्न बोर्नियो, देन क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, ईस्टर्न मैडागास्कर नाउ ओवर इन द अफ्रीका, then eastern arc mountain of Tanzania, then upper Guinean forest, and in Central America, Central American highland forest, Central America lowland forest, then Ecuador, tropical Andes and Atlantic forest, Brazil. You will find सारे hotspot अगर if you are noted are located more or less in the tropical region, है ना। So there must be, you know, the huge biodiversity that rather lies in the tropical region. Do remember this thing, guys. Okay. So I hope this explanation with the fundamentals of this geography is now pretty much clear with you guys. Physical geography. अब इसी का application होगा क्लास 11th की सेकेंड पार्ट में, ठीक है। That is with this title, Indian Physical Environment. It includes 6 chapter. ओके 6 चैप्टर्स है इसमें और इजी भी है, ठीक है, बट ये है मच फैक्चुअल, है ना। यहाँ पे अब आपको बहुत ज्यादा मैप्स मिलेंगे एंड देयर सिग्निफिकेंस आल्सो।